हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो आज हम डिस्कस करिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ए मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करिया पूर्व मु किछ इंफॉर्मेशन शेयर करछि। द फर्स्ट इज व्हाई इट इज इंपोर्टेंट बिकॉज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन न ईच एंड एवरी कांसेप्ट दरकार आसीबो आगु को जदि तुम पढिबो मोशन इन प्लेन लाइक योर प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, तापर टॉपिक अछि लॉज ऑफ मोशन। सेथे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत गुडे कांसेप्ट हम यूज करिवा। वर्क एनर्जी पावर, देन सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इवन एसएचएम रे तार भी बहुत एप्लीकेशन अछि। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ता होजे ओटा इंपोर्टेंट एंड वाइटल टॉपिक। सेकंड इज तार सिलेबस कौन कौन कवरेज करेगा। द फर्स्ट इज पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आपको बेस करे गुडा न्यूमेरिकल्स कर परिबा। देन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड कौन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। देन वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, then acceleration कोना आप भी डिस्कस करिबा। नेक्स्ट विल गो टू काइनेमेटिक्स इक्वेशन कोना से फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देन विल डिस्कस ग्राफ like position versus time, distance displacement versus time, speed versus time, velocity versus time, acceleration versus time. Next we'll discuss relative motion in one dimension, and at last we'll discuss some previous year's question that came in NET, JEE, and fully हमें solve करिबा NCERT exercise question with example question। तो ये सीरीज टा सारी भी मु तापे छोट छोट वीडियो सब डिफरेंट डिफरेंट वीडियो करछे। तो आज रो कंटेंट टा मोस्टली एई पार्ट अछि पोजीशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मु कोछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा NET और JEE पॉइंट ऑफ व्यू देखले को पार्ट इंपोर्टेंट। मोस्टली क्वेश्चन you will be getting question from kinematics and graph। ए दीटा रो मोस्टली क्वेश्चन बेसी आसे kinematics और graph रो। बाकी क्वेश्चन भी आसे बट मैक्सिमम क्वेश्चन ए kinematics इक्वेशन को बेस करी आसे। नेक्स्ट लेसन प्लान और एटा मु मेंशन करतली मोर वे ऑफ टीचिंग ता केमते रहबो। मु ए गोटे गोटे कंटेंट सारिबे दिदिटा लेक्चर, गोटे गोटे कंटेंट दिदिटा लेक्चर। तो गोटे लेक्चर रे कंप्लीट थ्योरी रहबो आ गोटे लेक्चर रे तारो न्यूमेरिकल रहबो। तो आज रो कंटेंट होउचे only will be discussing about position, frame of reference, distance and displacement एकदम बेसिक रूप तुमको कहबी। देन तापर हम धीरे धीरे एडवांस को जिबा और किछटा क्वेश्चन करियो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए बात ऊपर हम एबे डील करियो। देखो এই চারটা পার্ট কাহি দরকার। যেতବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ডিসକস করছে अबाउट द स्टेट ऑफ ए बॉडी लाइक बॉडीटा रेस्ट रो अछि कि मूवमेंट करछि। मूवमेंट कल तो मोशन आसी होला। तो बॉडीटा रेस्ट अछि हम ताको टेक्निकली केमते डिफाइन करबा और फिजिक्स लैंग्वेज रे केमते डिफाइन करबा रेस्ट ऑफ मोशन। हमें कहि परिबा जे ଗୋଟେ बॉडी तार पोजीशन को चेंज करूनी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ताको हमें रेस्ट कहि परिबा। एंड मोशन का कहबा इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तमाने बॉडी जदी तार पोजीशन को चेंज करूनी देन कहबा रेस्ट, जदी चेंज करूचे ताको हम कोन कहबा मोशन। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काहे ना एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन रो किछि डेफिनेशन नाही, इट्स ए रिलेटिव टर्म। मोर एग्जांपल दोचे, लेट आई एम स्टैंडिंग हियर, यू कैन से सर आपन को स्टेट टा होचे रेस्ट, बट एक्चुअली मु रेस्ट नाही। तो रेस्ट रे केते बेले नाही मु कहबी जदि जने बाहर अछि आ गोटे प्लैनेट रे ऑब्जर्व करछि मते देन प्लान अर्थ सहित मु भी रोटेट करूछि। तो ताकू फील हो मु रोटेट करूछि किंतु मो पाखरे जे अछि ताकू फील हो मु रेस्ट अछि। तेन कर तले रेस्ट और मोशन को हम डिफाइन करिवा। तो फर्स्ट पॉइंट मन रखिबा बॉडी रो पोजीशन को जतले हम डिस्क्राइब करछे तो कहा रेस्पेक्ट रे करछे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ऑब्जर्व करछे। ता माने एठी फर्स्ट जिंस हम देखिबा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जे frame of reference। So definition कौन, it is a place from where we can observe the position of the object। लिख परिबा it is a place from where we can take the observation, we can take the observation, okay। देन जदि हमें पोजीशन को देखिबा
पोजीशन मान होची गोटे बॉडी रो लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस लोकेशन with respect to frame of reference देखो तमे ताको टेक्निकली बुझ कने पोजीशन को डिस्क्राइब आमे केतले करबा त फ्रेम ऑफ रेफरेंस नबा कने की ऑब्जर्व करछि मु पा कहली मु एबे छिडा आइछि मोर पोजीशन टा मु रेस्ट रखिछि किंतु की ऑब्जर्व के करछि जदि मो पाखरे गोटे पिला ऑब्जर्व करछि ताको लागुछि मु रेस्ट अछि किंतु से जदि आ गोटे प्लैनेट रो मते ऑब्जर्व करछि ताको लागिबो मो मूवमेंट करछि तने करी गोटे बॉडी रो पोजीशन टा सबले डिस्क्राइब करिवो की फ्रेम ऑफ रेफरेंस तन दीटा जाको को रिलेटेड गोटे बॉडी के हम केबे तार पोजीशन को डिफाइन करि परिबो अनलेस अंटिल वी चोज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस तापर हम देखिबा रेस्ट का को होउछि रेस्ट और मोशन का होउछि रेस्ट होउछि इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ओके किंतु फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी कंसीडर करिबा then if a body does not change its position with respect to time अब मोशन का को हमें कहबा जदि बॉडी रा तार पोजीशन चेंज करूछ इफ ए बॉडी changes its position with respect to time कारण बॉडी रा जते बेले पोजीशन चेंज करछि हमें ताको आइडियली कहउछे मोशन बॉडी तो रेस्ट अछि हम पोजीशन चेंज करने हमें आइडियली कहउछे रेस्ट किंतु रेस्ट और मोशन न किछि एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं इट्स ए रिलेटिव टर्म कारण हमें डिफाइन कर परिबो न बॉडी टा रेस्ट अछि कि मोशन अछि गुड एग्जांपल दोज बुझ परिबो देखो गुड बेस्ट एग्जांपल दोउछि देखो लेट लेट एटा गोटे बस अछि राइट दिस ए बस टा याडू को मूवमेंट करछि टुवर्ड्स राइट ओके डेटा पर्सन छिड़ा आइछंती एठी ए एंड बी ओके आ गोटे पर्सन एठी रेस्ट अछि से स्टैंड रे छिड़ा आइछि ता नाम होछि सी बस टा मूवमेंट करछि बस रे दी जण रेस्ट रे छंती तो मते कहलो मु एठी जदी कहबे व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए एटा मूवमेंट करछि ना रेस्ट रे अछि कहि परिबो नो केबे कहि परिबानी अनलेस अंटिल कंसीडरिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बी रेस्पेक्ट रे ए रेस्ट रो अछि तमने मु कहि परिबे हां हां ए रेस्ट रो अछि बी रेस्पेक्ट रे बी को लागुछि ए रेस्ट रो अछि काइना दी जण हम तो गाड़ी भीतर अछन गाड़ीटा मूवमेंट करछि किंतु आको लागुछि ए रेस्ट रो अछि किंतु सी रेस्पेक्ट रे बस टा जाउछि एज वेल एज ए भी जाउछि ना ये तो बस रे अछि तो सी रेस्पेक्ट रे सी को लागिबो नै ए भी जाउछि तमने ए रो स्टेट एटी कोन रसला रेस्ट हे परिबो मोशन भी हे परिबो तने एटा को मु कहि परिबो रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी एटा को कहि परिबो मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी सेतपन केबे केबे देखतिबो जतले हम ट्रेन ने जाउछे हमको लागे गछोरा पछपट को जाउछे एक्चुअली हमर मूवमेंट होउछे जते सब ट्री अछि गछ सब से रेस्ट अछि हमर मूवमेंट होउछे तो हम निजो को गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिसाब रे भाबि नउछे ता माने हम निजो को रेस्ट भाबुछे जदि हम निजो को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाबुछे माने मन रखिबो हम निजो को रेस्ट भाबुछे तो हमको फील होची गछोरा पछकु जाउची किन गछ पछकु जाउनी गछ रेस्ट अछि हमें आगु जाउची तम जहां को तमे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखिबो ताको रेस्ट भाबी दो तमने एठी कंक्लूजन कोन पाइलो ए रो स्टेट ता कोन होची रेस्ट जदि हमें कहबा विथ रेस्पेक्ट टू बी आ ए रो स्टेट ता होची मोशन विथ रेस्पेक्ट टू कोन कहि परिबा सी सी रेस्पेक्ट रे एटा रेस्ट बी रेस्पेक्ट रे एटा मूवमेंट होची ओके रेस्ट और मोशन नो डेफिनेशन क्लियर तो एबे देखिबा मोशन को केतरा पार्ट रे हमें क्लासिफाई करछि केतरा टाइप रो मोशन होछि एंड स्टडी ऑफ मोशन को हमें मैकेनिक्स कहउछे तो मन रखिबो स्टडी ऑफ मोशन को हमें मैकेनिक्स कहउछे कोन कहउछे मैकेनिक्स तो मैकेनिक्स को हमें दीटा पार्ट रे मोस्टली डिवाइड करछे गोटे होची काइनेमेटिक्स आ गोटे होची डायनामिक्स गोटे होची काइनेमेटिक्स आ गोटे होची डायनामिक्स किछि किछि बुक रे लिखा है मैकेनिक्स के तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराइ छै स्टैटिक काइनेमेटिक्स डायनामिक्स सेटा ठीक अछि बट स्टैटिक ऊपर हम एबे फोकस करना
तो मेकानिक्स को दीटा पार्ट रे गोटे काइनेमेटिक्स गोटे डायनामिक्स काइने मींस व्हाट मोशन मैट्रिक्स मींस मैथमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स रे हमें कौन पढ़िबा स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज माने गोटे बॉडी टे मूवमेंट करछ तार स्पीड केते चेंज होउची वेलोसिटी केते गोटे केते सेकंड रे केते वेलोसिटी बॉडी केते सेकंड रे केते डिस्प्लेसमेंट कवर करला बॉडी एक्सेलरेशन केते बॉडी डी एक्सेलरेशन केते त माने बॉडी रो जते सब वेरिएबल अछि हमर लाइक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ता विषय रे हम सब स्टडी करिवा बट विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज कोन पई मोशन ता होची हमको किछ फरक पडुनी मोशन ऊपर फोर्स पडुची कि किछि एनर्जी का कंजप्शन होउची किबा किछि पावर डिलीवर होउची आ विषय हम किछि पडुना हम सिंपली खाली पडुचे मोशन ता कोन माने कोन चेंजेस सब होउची ता माने विल्स talk about only the variable parameter like speed velocity acceleration distance displacement then mu likhi paribi study of motion without considering its cause without considering its cause like example de dochi ka ka विषय पढ़िबा distance displacement velocity speed and acceleration extra okay so it is kinematics dynamics con same thing will study with considering its cause body upre kete force पड़ुची को type of force पड़ुची से force रो magnitude kete force रो direction kete different type of force अछि मु laws of motion detail explain करिवे like weight is a force normal reaction is a force tension is a force friction is a force okay तो डायनामिक्स रे हमें कौन पढ़ेबा study of motion with considering its cause with considering its cause माने laws of motion work energy power system of particle rotational motion क्षेत्र torque system of particle torque रो concept आसीबो okay and moment of inertia रो concept आसीबो angular momentum रो concept आसीबो and laws of motion तुम देखियो linear momentum रो concept अछि different type of force अछि तो ता विषय रे जले हम स्टडी करियो ताको हम कहूछ डायनामिक्स ओके नेक्स्ट हमें देखिबा मोशन ता केत्रा टाइप एक्चुअल देखो मोशन होची तीनटा टाइप जदि हम ब्रॉडली मोशन को क्लासिफाई करिबा गोटे होची वन डायमेंशन मोशन गोटे टू डायमेंशनल मोशन आ गोटे थ्री डायमेंशनल मोशन देखो वन डायमेंशनल मोशन होची जति बॉडी रो पोजीशन चेंज होची जे कोनसे गोटे एक्सिस रे बॉडी एमति सीधा जाउची मे बी एक्स एक्सिस हो किबा वाई एक्सिस हो किबा जेड एक्सिस हो तो से टाइप रो मोशन को हम कहूचे मोशन इन वन डायमेंशन तो बेले हम तो कहबा मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो जदि बॉडी रो पोजीशन चेंज होची इन एनी प्लेन मे बी एक्स वाई प्लेन हो किबा वाई जेड प्लेन हो किबा जेड एक्स प्लेन हो ताको हम कहूचे मोशन इन 2D ताको हम कहूचे मोशन इन प्लेन हम ताको मोशन इन प्लेन कहि परियो जदि बॉडी रो पोजीशन चेंज होची तीनटा जाको कोऑर्डिनेट को नहीं कि ताको हम कहूचे 3D तो देखो ए 2D रो एग्जांपल होची मोशन इन प्लेन लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन को बॉल को पकोचे बॉल टाइम ते जाउची प्रोजेक्टाइल मोशन नो एग्जांपल होची मोशन इन 2D रे सर्कुलर मोशन इन 2D वो ट्रेन ते सीधा जाउची कि गोटे तमे सीधा जाउचो सेटा होची मोशन इन 1D मोशन इन 3D रो एग्जांपल देखतिबो केमिस्ट्री एटा तो नाही हम सिलेबस रे हम मोस्टली डेटा पर डील करिया तो मोशन इन 3D देखतिबो जो एटम्स मॉलिक्यूलर मोशन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से सब जिंस कि तमे देखतिबो गोटे बर्ड फ्लो जते फ्लाई करची एक्स एक्सिस जाउची वाई एक्सिस देन जेड एक्सिस चेंज होची त माने पोजीशन राती तीनटा जाक कोऑर्डिनेट रे मिसी के चेंज होथु त हम कहूचे 3D दीटा कोऑर्डिनेट हले 2D गोटे कोऑर्डिनेट हले 1D तो देखो मोर एग्जांपल दोची तमे कहि परियो लेट एटा गोटे एक्स एक्सिस अछि बॉडी रो पोजीशन एठी अछि p1 अछि बॉडी कोन कला ए जागा को चली आसला गोटे ऑब्जेक्ट टे p1 नु p2 गला तम तर पोजीशन ता चेंज होची जे कोनसे गोटे एक्सिस रे एक्स एक्सिस हे पारे वाई एक्सिस हे पारे जेड एक्सिस हे पारे सेटा होची मोशन इन 1D और ताको हमें कहि परियो मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहि परियो कि यदि बॉडी रो पोजीशन चेंज होची जे कोनसी गोटे प्लेन ने लेट हमें एक्स वाई
रखिए xy प्लेन एटा अछि बॉडी रो पोजीशन एठी अछि p1 बॉडी रो पोजीशन ए जगह को चेंज होला p2 देखो p1 ने तार कोऑर्डिनेट के थिला x1 y1 p2 रे तार कोऑर्डिनेट आसी x2 y2 तन बॉडी रो पोजीशन चेंज होची बाय कंसीडरिंग any two of the coordinate maybe xy coordinate yz coordinate or zx coordinate तन को ताको बेटर वेयर भी तुम डिफाइन कर परबो बॉडी रो पोजीशन जे कोनसी गोटे प्लेन ने भी चेंज होची कोइ परबो तो आको हमें कोइ परबो मोशन इन प्लेन motion in plane and three dimension motion कोन होची जदी बॉडी रो पोजीशन एमती चेंज होची x y z अछि लेट इनिशियल पोजीशन बॉडी रो p1 तार कोऑर्डिनेट होची x1 y1 z1 जदी बॉडी रो पोजीशन आउट पॉइंट को चली आसी जहार कोऑर्डिनेट होची x2 y2 z2 तो ए टाइप रो मोशन को हम कहबा मोशन इन 3D ओके तो ताकू जदी हमें डिफाइन कर दबा देखो हम लिखि दोछि तमे भी लिखि परिबो motion in 1D कोन लिखिबो if the position if a body changes its position by taking any one of the coordinate any one of the axis एमते लिखि परिबो ताको होछि motion in 1D तो motion in 2D लिखि परिबो if a body changes its position by taking any one of the plane by taking any one of the plane may be xy yz किबा zx से पर 3D रे कोन लिख परिबो if a body changes its position by taking all the three coordinate all the three axes or all the three coordinates टुडे एग्जांपल तुम कहथिली एग्जांपल कोन लिख परिबो सर्कुलर मोशन लिख परिबो जोटा मोशन इन प्लेन अंडर रे आसी आ गोटे प्रोजेक्टाइल मोशन भी लिख परिबो मोशन इन 1D रेक्टिलिनियर मोशन लिख परिबो ओके so that is all about the classification of different type of motion one dimensional motion two dimensional motion and three dimensional motion okay so तापरे हमें देखिबा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोन और ता भीतर डिफरेंस कोन बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट मन रखिबो एटा होची बेसिक्स एथ्रु टिके मो आगे बेसिक टा साथे तापर धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन को जिबा ओके एबे हम डिस्कस करबा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भीतर डिफरेंस कोन देखिबो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्टेंस होची द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी whereas displacement is the shortest path covered by the body actual path माने ଗୋଟେ एग्जांपल दोछि लेट तमे एठी छिडा हिचो एटा होस तम स्कूल लेट दिस इज योर स्कूल ओके तमे स्कूल को जिया पे एमती ଗୋଟେ रास्ता अछि राइट एटा होछि एक्चुअल पाथ ताको हमें डिस्टेंस कहउछ जे तमे ଗୋଟେ स्ट्रेट रोड तयारी करतबो सीधा रास्ता रे गले ताको हमें कहबा डिस्प्लेसमेंट वेरी सिंपल लोकल लैंग्वेज रे कहउछ एकदम सीधा रे जाउछ ताको हमें डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ आठरो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं अच्छा एक्चुअल पाथ होची तमे नेचुरल पाथ जोटा अछि एक्चुअल केते डिस्टेंस कवर करछो एटा होची एक्चुअल केते पाथ अछि एटा होची डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट पाथ को होची डिस्प्लेसमेंट एटा होची डिफरेंस तने हम लिखि दे परिबा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस तने लिखि दे परिबा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ताको हमें डिस्टेंस कहउछे and shortest path covered by the body ताको हमें displacement कहउछ okay and distance unit is meter displacement unit is meter kilometer किछ भी नहीं परिबो but both are same unit and distance is a scalar quantity काहे scalar quantity because are only magnitude अछि आ किछ डायरेक्शन नहीं only magnitude no direction किंतु displacement is a vector quantity कहीं के ना आर magnitude अच्छी both magnitude and direction
सेतपय ताको वेक्टर क्वांटिटी कहउछ एंड आउट पॉइंट मन रखिबो डिस्प्लेसमेंट ता डिपेंड करछि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट whereas डिस्टेंस डिपेंड करछि पाथ ऊपर तमे डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन the path whereas displacement depends on initial point or initial position and final position eta ko important man rakhibo distance depends on path whereas displacement depends on initial point initial position and final position देखो गोटे एग्जांपल नो तुम जान परिबो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन काहे के डिस्प्लेसमेंट डिपेंड तापर काहे करछ देखो मु कहबी ए और बी दुटा पॉइंट है तुम ए रु बी के जाउछ दैट दिस इज ए पाथ नंबर 1 दिस वन इज पाथ नंबर 2 एंड दिस वन इज पाथ नंबर 3 तुमको तीनटा पाथ अछि तुम को भी पाथ रे जाय परिबो त डिस्टेंस डिपेंड करछि पाथ पर एठी की 1 टा होछि डिस्टेंस 3 टा होछि डिस्टेंस 2 टा डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस भी हेपर जदि गोटे पाथ थिबो then go एठी 1 2 3 all are distance and 2 is only displacement because shortest path okay ता माने डिस्टेंस एठी डिपेंड करछि पाथ पर को टाइप रो पाथ तमे फॉलो करछ whereas डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करछि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आउट डिफरेंस मन रखिबो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भितरे गोटे इंपोर्टेंट डिफरेंस मन रखिबो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उपरे डिस्टेंस टा जीरो हो पारिबो पॉजिटिव हो पारिबो डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव एटा मन रखियो whereas डिस्प्लेसमेंट जीरो हो पारिबो पॉजिटिव हो पारिबो नेगेटिव हो पारिबो मु ताको एक्सप्लेन करी गोटे एग्जांपल देकी ओके आ गोटे पॉइंट मन रखिबो नोट दे लिखिबो डिस्टेंस is always greater than displacement always distance is always greater than displacement distance टा displacement थारु सब बेले अधिक हबो और इक्वल भी हेपर देखो इस ए जिंसटा को मैं एलाबोरेट करछि केयरफुल सुना मोर एग्जांपल थ्रू रे एलाबोरेट करछि लेट अस हमें कंसीडर करिबा तीनटा पॉइंट ए बी एंड सी ओके आ गोटे पॉइंट भी कंसीडर करिबा डी ए पॉइंट होची ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके देन एटा 0 एटा लेट इट बी +20 +10 +20 एटा लेट इट बी -30 एटा होची पॉजिटिव एक्स एक्सिस एपटा होची नेगेटिव एक्स एक्सिस ओके जदि मु कहिबी ए रु बी आमे जाउचे तो डिस्टेंस टा कोन हबो 10 और डिस्प्लेसमेंट केता हबो 10 जदि मु कहबी ए रु बी रु सी जाउचे डिस्टेंस हबो केते 10 + 10 20 डिस्प्लेसमेंट भी 10 + 10 20 किंतु जदि मु कहबी ए रु बी जाउचे बी रु सी पुनी सी रु अगेन बैक करचे बी की तो सेठी कहि पारे डिस्टेंस केते 30 डिस्प्लेसमेंट केते 10 देखो मु एठी लिखि दोची फर्स्ट देखिबा मोशन टा कोन होउची देन देखिबा डिस्टेंस देन देखिबा डिस्प्लेसमेंट बुझो ठीक करी ओके मु जदि कि मोशन टा ओनली ए रु बी होउची तो डिस्टेंस केते होउची चेंज इन पोजीशन केते 10 तने +10 डिस्प्लेसमेंट केते +10 जदि मु कहबी ए रु बी रु सी जाउची ए रु बी रु सी तो डिस्टेंस +20 डिस्प्लेसमेंट +20 किंतु मु जदि कहबी ए रु बी रु सी पुनी सी रु बी अगेन बैक करछि तन ए रु बी रु सी रु बी जते बैक करछि मु कहबी डिस्टेंस केते 10 + 10 अगेन 10 + 30 लेकिन डिस्प्लेसमेंट केते होछि इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट केते गला 10 तवन एठु कोन जानलो तमे देखो फर्स्ट दुटा केस रे डिस्टेंस जहां डिस्प्लेसमेंट से या बोथ आर पॉजिटिव इन थर्ड केस रे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पॉजिटिव बढ़ी जाउची किंतु डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कमी जाउची जदि हमें फोर्थ केस देखिबा ए रु बी रु सी रु बी पुनी बी रु अगेन ए देन एठी कहबा डिस्टेंस केते 10 + 10 + 10 + 10 केते जो +40 whereas डिस्प्लेसमेंट केते जो इनिशियल पॉइंट जोटा फाइनल पॉइंट सेटा 0
तापर देखिवा जदि हम ए रु बी रु सी रु बी रु ए पुनी अगेन ए रु डी जाउछे माने जर्नीटा ए रु एमती बुली बुली डी के आछे ता माने आमे एठी कहि परिबा डिस्टेंस केते 10 plus 10 20 plus 10 30 plus 10 40 plus 30 केते plus 70 एक्चुअल पाथ केते कवर करछ किंतु डिस्प्लेसमेंट एठी आसीबो कोन इनिशियल पॉइंट एटा फाइनल पॉइंट केते आसीबो -30 बुझ परलो ता माने एठी कंक्लूजन कोन जानछो डिस्टेंस ता ऑलवेज पॉजिटिव and it never be negative zero ही परिबो जे हम रेस्ट रो छै डिस्टेंस केते आछो जीरो किंतु डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही परिबो नेगेटिव पे जीरो ही परिबो जीरो केते आछो त बुली बुली सेम जगह को पहुंच सर्कुलर मोशन केस रे डिस्प्लेसमेंट केते आसे जीरो आई होप इट इज क्लियर ओके ए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रो बहुत गुडे क्वेश्चन अछि हमें सॉल्व करियो बहुत गुडे प्रॉब्लम अछि आज रो पार्ट तो खाली थ्योरेटिकल पार्ट कहली होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट टुडे if you like my video please do subscribe thank you so much